हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे द कंसेप्ट ऑफ मेमोरी। ये भी एक कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन का एक पार्ट है, ये कि कंसेप्ट ऑफ मेमोरी। सो ये कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन का ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस किए थे क्या, द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, व्हाट इज डाटा, व्हाट इज information, what are the different functions of computer. So in this video हम लोग डिस्कस करेंगे द कंसेप्ट ऑफ मेमोरी। ओके, सो कंप्यूटर मेमोरी, व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या है ना, कंप्यूटर मेमोरी इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम। कंप्यूटर मेमोरी इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम का ये एक पार्ट है, यूज टू स्टोर डाटा and programs either permanently or temporarily depending on the requirements and the types of memory. Okay, so computer memory है क्या, computer memory is the part of the system used to store data and program either permanently or temporarily depending on the requirement of the user and the types of memory available. सो यूजर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंप्यूटर का जो मेमोरी है वो डाटा को स्टोर करेगा इधर परमानेंटली और टेम्पोररीली। अगर यूजर को टेम्पोररीली स्टोर करना नहीं चाहिए तो वो परमानेंट टेम्पोररीली वो स्टोर करेगा। ओके, टेम्पोररी मीन्स वंस कंप्यूटर इज ऑफ, दैट इज एवरीथिंग इज लॉस्ट। एंड द टाइप्स ऑफ मेमोरी, अगर कंप्यूटर में दो टाइप का मेमोरी होता है। अगर कंप्यूटर का मेमोरी ही क्या है, वो टेम्पोररी मेमोरी है तो टेम्पोररीली ही स्टोर करेगा। ओके, सो कंप्यूटर मेमोरी इज ऑफ टू टाइप। तो कंप्यूटर मेमोरी इज ऑफ टू टाइप, वन इज प्राइमरी मेमोरी, अनदर वन इज secondary memory. Okay, so primary memory, generally primary memory is also known as main memory. Main memory and secondary memory is also known as ये ऑक्सिलरी मेमोरी और ये परमानेंट मेमोरी। इसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट memory. Okay, so these are the two types of computer memory, primary memory and secondary memory. तो देखते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो मेन मेमोरी होता है वो क्या है, वो है प्राइमरी मेमोरी। Primary memory is of two types as shown in the image below. Generally, primary memory is of two types. One is RAM, another one is ROM. RAM means random access memory, and ROM means read only memory. Okay, so RAM means your random access memory and ROM means read only memory. दोनों का काम क्या है हम लोग देखते हैं। So RAM, first of all we have discussed about RAM. RAM means random access memory. RAM referred as temporary memory. So RAM is generally known as temporary memory. Everything stored inside the RAM is lost when computer is power off. Okay, जब कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाएगा या शट डाउन हो जाएगा तब रैम मेमोरी में जो कुछ भी डाटा होगा वो सब क्या होगा ना, वो डिलीट हो जाएगा। ओके, सो रैम मेमोरी बिकम एम्प्टी। रैम मेमोरी क्या होगा ना, रैम मेमोरी एम्प्टी हो जाएगा। सो रैम रेफर्ड एज टेम्पोररी मेमोरी
in which information stored is lost once computer is turned off. ओके जब कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाएगा यानी कि शट डाउन हो जाएगा, सो व्हाट एवर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इनसाइड द RAM memory is lost. So, hence it is a volatile memory. That's why it is known as volatile memory. Instruction written in this memory can be modified. Whatever instruction written, जो कुछ भी instruction RAM memory में होगा वो सब क्या होगा ना, वो सब modified हो सकता है. Hence it is also known as programmable memory. That's why it is known as programmable memory. So RAM memory दिस टाइप का होता है. ये एक इमेज है, ये किसका है, ये है RAM का. ओके ये कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड में ये मेमोरी फिट होता है. ओके समझ में आया सबको. नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस ऑफ RAM. RAM का RAM मेमोरी जो है, RAM मेमोरी का फंक्शन क्या है. इट स्टोर्स डाटा टिल इट गेट प्रोसेस्ड. प्रोसेसिंग के बाद नहीं सॉरी इट स्टोर्स डाटा टिल इट गेट प्रोसेस्ड. जब तक डाटा प्रोसेसिंग नहीं हुआ है तब तक वो कहाँ होगा ना, वो RAM मेमोरी में होगा. इट स्टोर इंस्ट्रक्शन फॉर डाटा प्रोसेसिंग. RAM memory stores the information, whatever instruction for data processing, everything is stored inside the RAM memory. It acts as a working space where data processing take place and intermediate results are stored. So RAM also acts as an working space. मतलब इसको हम बोलते हैं क्या, स्टेज. वन टाइप ऑफ स्टेज where actors are perform their act. So like that it acts as a working space. एक working space provide करता है to perform the any processing operation, and whatever intermediate result produce everything is stored inside the RAM memory. बीच में अगर कुछ result निकलेगा जो कि उसी एग्जीक्यूशन का कुछ टाइम बाद फिर से रिक्वायर्ड होगा उसी वो रिजल्ट भी वो RAM मेमोरी में स्टोर होता है. ओके इट स्टोर प्रोसेस्ड डाटा, इट स्टोर्स प्रोसेस्ड डाटा रिजल्ट्स बिफोर इट इज सेंट टू आउटपुट डिवाइसेस. whatever result produced after processing of the data, it is stored inside the RAM memory before it is sent to output devices. आउटपुट से पहले जो कुछ भी रिजल्ट होगा वो रिजल्ट सब कहाँ स्टोर होगा ना, वो RAM मेमोरी में स्टोर होगा. ओके जो आउटपुट हो जाएगा तो वो डिपेंड करेगा कि वो RAM मेमोरी में स्टोर होगा या वो सेकेंडरी मेमोरी में आएगा. ओके देन नेक्स्ट देखते हैं रोम. रोम इज द रीड ओनली मेमोरी. रीड ओनली मीन्स रोम मेमोरी में जो कुछ भी डाटा होगा वो ओनली वी कैन रीड इट, वी कैन नॉट मैनिपुलेट इट, वी कैन नॉट एड इट, वी कैन नॉट राइट इट. ओके so ROM is a permanent memory in which information stored is available even if computer is turned off. मतलब ये एक परमानेंट मेमोरी है जहाँ इंफॉर्मेशन कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी वो अवेलेबल होता है. ओके इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन दिस मेमोरी, इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन दिस मेमोरी कैन ओनली बी read and cannot be modified. So whatever instruction is stored in this memory can only be read. जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड होगा रोम मेमोरी में वो इंस्ट्रक्शन और डाटा हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं. वी कैन नॉट मॉडिफाइड इट. जनरली रोम हैज स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन, जनरली रोम हैज startup instruction which is executed every time when computer is switched on.
जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर ऑन होने के लिए जो कुछ भी प्रोग्राम का ज़रूरत होता है वो सब प्रोग्राम कहाँ होता है, वो सब प्रोग्राम रोम मेमोरी में होता है, और जो कि कंपनी ने पहले से उसमें इंस्टॉल करके दिए हैं, जो कि हम लोग मॉडिफाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग का कंप्यूटर क्रैश होने से भी कंप्यूटर ऑन होगा, क्योंकि जब कंप्यूटर ऑन होगा तब तो हम लोग उसी में कुछ प्रोग्राम या एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं ना। तो इसीलिए ROM memory generally stored the instruction which is executed every time when computer is switched on. This program is known as startup program. वो प्रोग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्टअप। Okay, so this is the RAM memory. Then difference between RAM and ROM. So what is the difference between RAM and ROM? We have already discussed RAM is the volatile memory. Volatile means whatever data inside RAM memory, everything is lost when computer is switched off. जब कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा तो जो कुछ भी डाटा RAM मेमोरी में होगा वो सारे डिलीट हो जाएगा। बट रोम इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल यानी कि परमानेंट मेमोरी। देन द कंटेंट आर टेम्पोररी, डाटा इज लॉस्ट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज लॉस्ट। जब कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ हो जाएगा यानी कि कंप्यूटर बंद हो जाएगा तब एवरीथिंग इज लॉस्ट। द contents are permanent. In case of ROM, the contents are permanent. Data is not lost even when power is switched off. पावर ऑफ होने से भी इसमें डाटा लॉस्ट नहीं होगा। देन RAM मेमोरी में क्या है, यूजर डिफाइंड प्रोग्राम कैन बी स्टोर्ड। यूजर का जो कुछ भी प्रोग्राम होगा वो सारे प्रोग्राम RAM मेमोरी में स्टोर हो सकता है। बट रोम मेमोरी में क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्टिंग operating system supporting programs can be stored. Okay, so रोम मेमोरी में क्या होगा ना, जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्टिंग प्रोग्राम यानी कि स्टार्टअप प्रोग्राम, कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए जो कुछ के प्रोग्राम जरूरत है वो सारे प्रोग्राम कहाँ स्टोर होगा ना, वो रोम मेमोरी में स्टोर होगा। देन प्रोसेसिंग स्पीड इज हाई, RAM मेमोरी का क्या है, वो प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ा हाई है, बट ROM memory का processing speed is low. Okay, then next it is of two type. RAM memory is of generally two type. One is SRAM, which is faster and costlier, and another one is DRAM. SRAM is static RAM, S for static and D for dynamic. Okay, so static read only memory and D for dynamic read only memory. Static RAM is generally faster and costlier, but and dynamic read only memory is little bit slower and not so much costlier. Okay, so like that ROM memory is also, it comes in different types. ROM memory is of different types such as PROM, EPROM, EEPROM and flash memory. Okay, so PROM means, P means programmable, read only memory. E means EP means electrically programmable read only memory, and EEP means electrically erasable.
इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड अनदर वन इज फ्लैश मेमोरी। जैसे कि हम लोग पेन ड्राइव यूज करते हैं या फ्लॉपी डिस्क यूज करते हैं, सो लाइक दैट अनदर वन इज फ्लैश मेमोरी इज ऑल्सो रीड ओनली मेमोरी। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी। सो आई होप कि आप सभी को ये सारे चीज़ समझ में आ गया होगा, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन RAM एंड ROM। ओके, नेक्स्ट इज योर सेकेंडरी मेमोरी। वो था प्राइमरी। प्राइमरी में क्या होता था, वो टेम्पोररी मेमोरी है, एंड जो सेकेंडरी मेमोरी होगा ये क्या है, ये परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी। sometimes when data sometimes when data to be processed is large, it cannot fit in primary memory as it is limited. In such cases we use supplement memory or secondary memory. Secondary memory helps to store information permanently and is non-volatile in nature. It helps to store the information permanently and is non-volatile in nature. Okay, so क्या होता है ना, sometimes when data to be processed, क्या होता है some cases जब डाटा का जो साइज होता है वो साइज थोड़ा क्या होता है ना, वेरी लार्ज साइज का जब डाटा होगा जो कि प्राइमरी मेमोरी में पॉसिबल नहीं है फिट होने के लिए, तो प्रोसेसिंग के लिए क्या होगा ना, थोड़ा बड़ा साइज का मेमोरी का ज़रूरत होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो सेकेंडरी मेमोरी में यूज होगा। सेकेंडरी मेमोरी we can use supplement memory which is known as secondary memory. Secondary memory helps store information permanently. Secondary memory में information permanently store होता है which is non volatile in nature. Example of secondary memories are compact disc जो CD होता है, और floppy disk, पेन ड्राइव, external hard disk, इंटरनल हार्ड डिस्क एटसेट्रा। सो दीज आर द डिफरेंट सेकेंडरी मेमोरी। आई होप कि ये सारे चीज़ आप सभी को समझ में आ गया है। सो फ्रेंड, ये था मेमोरी का कंसेप्ट। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फिर आगे डिस्कस करेंगे। सो आज का सेशन को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल देन